start. Hi, welcome back to the series of videos that we have been putting for CAT and CAT 21 aspirants especially. I am now giving a video on last 50 days to CAT. देखो ये it's just now अगर आप SLT में थे, LT में थे, crash में थे तो you're playing a match. या तो you're playing a test or you're playing a 50 hours or you're playing a 2020. Whatever be the case, last 50 days means it is all about finishing the match. And last 50 days means the entire preparation is anchored around mocks. But balancing. इतना भी mock नहीं कि मैं over exhaust होता जा रहा हूँ. So there are 2-3 things that you have to keep in mind in last 50 days. Don't overspend on any topic. And always, you know, when you have prepared a strategy, still keep a backup plan for your strategy because you never know what will happen that day. So you might have to change your strategy. आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन उस दिन करना पड़ सकता है. So keeping all these things in mind, last few days means it's about to be over. So first of all, it's about to be over. Keep this thing in mind and do not leave the preparation now. Last few days means that you have to plan them very well. You have to prepare a structure where you have to take mocks. You have to go with an organized approach, structured approach. Whatever you are doing, you are primarily doing for your strength area because eventually this strength area will improve the overall score. अभी हम ओवरऑल स्कोर की बात करने लगे हैं बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो 80 परसेंटाइल के नीचे 70 परसेंटाइल के नीचे खेल रहे होंगे. यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ओवरऑल स्कोर मैक्सिमाइज करना है. सो अब वक्त है वीकनेसेस को डंप कर दो. इवन फॉर दोज पीपल हु आर स्कोरिंग ऑन अ हायर साइड, वीकनेस को डंप कर दो. अभी उस पर ज़्यादा काम नहीं करो. अभी फोकस मोर ऑन योर स्ट्रेंथ एरिया एंड this is the time where you can actually identify those topics which you will eliminate during the exam day and you will not attempt them. So you should not be exhausted by mocks. Take mocks, but do not worry about the mocks because mock is just, you know, a Ranji that you are playing, a practice match that you are playing. And please control your low feelings. This is the time to control your low feelings, especially low feelings. बहुत परेशान कर रही है, मुझे मालूम है. जब स्कोर्स नहीं आते तो और ज़्यादा परेशान करती है, बट कंट्रोल तो तुमको ही करना पड़ेगा. आई कैन ओनली टेल यू दैट यू हैव टू डू इट रेगुलरली, यू हैव टू कंट्रोल देम. बट इन सारे मॉक से ऑलवेज आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस, दोज स्लो बॉल्स विच विल बी प्लेइंग दैट डे. एंड बिलीव मी, मॉक्स का एनालिसिस करते रहो और ये आइडेंटिफाई करते रहो कि मेरे लिए कौन सी डिफिकल्ट बॉल्स आ रही हैं जिनको मुझे छोड़ना है. देयर इज नो हार्म इन लीविंग दीज टफ बॉल्स. दैट इज वॉट यू हैव टू एनालाइज थ्रू दीज मॉक्स इन लास्ट 50 डेज. एंड अगेन वेरी रेलिवेंट फॉर यू, सिलेबस. तुम लोग हमेशा बोलते रहते हो कंप्लीट नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ. बिलीव मी, तुमको आखिर तक भी यही लगेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज इवेंचुअली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एप्टीट्यूड टेस्ट. सो यू विल हैव टू कंट्रोल योर ओन थॉट्स. You will have to take care of the topics which you know well. You will have to take care of the topics where you can play well. And most importantly, you will have to have faith on your own self and on the preparation that you have done in the last few months that you have done. So eventually it's a game of the entire preparation that you have done. It's not a game of last few days. लास्ट फ्यू डेज में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमको हमारा फेथ खुद पर से नहीं खोना है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बहुत सोच समझ के मैं तुमको आज से बोलता हूँ, अक्टूबर 6-7 से लेके और 28 नवंबर तक यू हैव टू अवॉइड कपल ऑफ थिंग्स. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अवॉइड इज you have to avoid WhatsApp, you have to avoid Insta, you have to avoid Facebook, you have to avoid YouTube, because these things will, you know, create only anxiety and stress. Somebody will come and will give something, somebody will come, will discuss his strategy. So you cannot copy anyone's strategy in this frame of period left. So please avoid all these things. Avoid negative thoughts and avoid diverse material. You have been playing on one set of material, play on that only. Play on the strength area. It's you who can do it. Believe me, I've been saying this round the year
that you should have faith on your own self. लास्ट के 50 दिन जो सबकॉन्शियस माइंड में रखोगे वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तुम्हारे काम आएगा. So with all this, wish you all the best, guys. Keeping this thing in mind that yes, I have full faith in you. We all your faculty members have full faith on you. You can do it. So just have faith on your own self. Wish you all the best. May God bless you.